I am Dr. MC Oza, Faculty of Mathematics from MKT Education. Today, we will discuss one of the most important chapter of mathematics, that is calculus. And you know, the calculus is the most powerful tool for all engineers. And in calculus, you cover mainly three chapters. One is limit, second one is derivative, third one is integration. And in the previous classes, you must have read limit and derivative. But integration, it has the special importance. In integration, again it is divided into two parts. One is the general integration and the second one is the definite integral. The definite integral is the keystone for every engineer because it has a lot of practical applications and without which the engineer cannot prosper. So you must have to be very thorough about the definite integrals, and it is not a very difficult subject but very interesting, but you have to go through it. So what is the definite integral and how we will start and how we will work out the problem, that we will discuss now. You see, you have read the integration, and as now we will discuss the definite integral, you just see the difference. When we study integration, that is integral of a function fx with respect to x. That is integral of a function with respect to x is written as integration fx dx. But definite integral, we write integration a to b fx dx. And this one is called as lower limit. And this is called as upper limit. Right? So this is the basic difference. So this is the integral of fx dx, this is the integral of fx dx from a to b. Right? Why we use this definite integral? In definite integral, why we use this limit? तमे देखो पिला माने जति मु तुम कहबी जे हाइट मेजर कर, ए कथा कोन अर्थ किछ नै। हाइट मेजर कर जति मु कहबी हाइट मेजर कर कांथर, स्टिल दैट आर मध्ये किछ अर्थ नै। काहे कि ना कांथर हाइट मेजर कर कोठु केते मेजर करबो, जति सेटा कोहा न जीवो ताले मध्ये किछ। तेनो प्रथम कथा होची व्हाट टू मेजर, हियर fx टू मेजर with respect to what, this is dx. And then from what point to what point, that is the limit. This is the application of engineers. आमे जेतन मैथमेटिक्स लोक पढिबा खाली मेजरमेंट कोन केमिति मापिबा से ना, किंतु इंजीनियर लेवल पढिबे जहा को भी मेजरमेंट करिवे ता कोठु केते पडला। सपोज तमे सिविल इंजीनियरिंग पिला ओटा रास्ता रो लेंथ मापिबो, जदि लेंथ मापिबो ताहेले कटक रो भुवनेश्वर मापिबो ना, खाली हम कहबे मेजर द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे, इट हैज नो सेंस। तेनु जितेबेले तुमे मेजर करिवो, एरिया बाहर करिवो, लेंथ बाहर करिवो, एडा सब इंटीग्रेशन यूज हबो। सेही जितेबेले इंटीग्रेशन यूज करिवो, एरिया बाहर करिवो, को एरिया रो लेंथ केते, ब्रेड्थ केते, केते टू केते, लेंथ मेजर करिवो केते टू, से जो केते रु केते, व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट, दैट इज a to b, right? So in the definite integral, mainly we use the lower limit and upper limit, which is must. First thing. Second thing, when you integrate any function fx, you get a result phi x, and in that you use the definite integral constant c. Right? And why you use this integral constant, that is also already taught to you. But here in definite integral, no need to write c. Only you will have the integration value fx is phi x. Here also integration of fx is phi x. Here also integration of fx is phi x. But here you use definite integral. Here no need to use this integral constant. Here don't use the integral constant. You use the limit, that is from a to b. Right? And that is written as phi of b minus phi of a. That is upper functional value of upper limit minus functional value of lower limit. This is the basic
and fundamental rule of calculus, that is called fundamental rule of calculus or integration. You can say integration, right? Fundamental rule of integration. So you get a functional value for integration and then take the limit, that is upper limit minus lower limit. And how this happens, I will give you with examples, right? Now you see the examples. Let us consider a very simple example, the algebraic functions. So integration x dx, এটা কি ইন্টিগ্রেশন? অর্ডিনারি ইন্টিগ্রেশন, মিন্স ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল নুহ, কাহিଁକି এটি লিমিট লোয়ার লিমিট নাই কি অপর লিমিট নাই। But if we give a limit, suppose 2 to 3, so lower limit is 2, upper limit is 3, then what is the integration of x? That is x square by 2. How? You know integration of x to the power n is what? That is x to the power n plus 1 by n plus 1. Here what is n? N is 1. If we use this formula, then it is x to the power 2 by 2. This is the integral value. And here we will not use integral constants, then use the limit, that is 2 to 3. Then first you use the upper limit value, that is 3 square by 2 minus 2 square by 2, that is 9 by 2 minus 4 by 2, that is 5 by 2. So this is the answer, right? So we use this formula for this function, and this is a particular value for this integral for this limit. If we change the limit, the result will be different, right? Similarly, we can consider some more examples, students. Now I will give you another example, that is integration sin x dx from 0 to pi 8. So here function is sin x, limit is 0 and pi 8. So it's, what is the integration of sin x? That is minus cos x. Remember, one rakhibo, derivative of sin x cos x, integration of sin x cos x रे गोटे माइनस थाक दो, तो उल्टा पलटा करियो नाही, इंटीग्रेशन जतबे sin cos x सहित गोटे माइनस, तापरे its limit, that is 0 to pi by 2, that is minus cos pi by 2 minus cos 0. देखो हमर थला कोन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट फंक्शन टा कोन माइनस cos x तो माइनस cos 0, एटा होची फॉर्मूला माइनस, सो दैट इज माइनस cos pi by 2 माइनस माइनस प्लस cos 0. एठी गला परे ए जो डाटा cos pi by 2 और cos 0 तुमको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रो सबतक वैल्यू सब बेले मन रखे पड़ो, cos 0 केते और cos pi by 2 केते, cos 0 1, cos pi by 2 0, जेहेतु 0 एठी 0 रो साइन दरकार नहीं, सो माइनस 0 लिखा दरकार नहीं, दैट इज 1. सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin x dx हैला 1. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 tan square x dx. देखो आगु जो दिटा एग्जांपल हम देथिले x to the power 1 आ गोटे थिला sin x, से दिटा का फंक्शन रो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला थिला, बट tan square x रो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला नाही, तो सेटा को हम केमिति स्टार्ट करबा, ता रिलेटेड फार्मूला केते हम कोस देखो, यू नो 1 plus tan square x is equal to sec square x. एटा तमे 10th क्लास रे स्कूल ले पढिछो, 1 plus tan square x is equal to sec square x. सेठू हम पाइबा tan square x. tan square x केते ना sec square x
माइनस 1 तबे पुणी तो मन में आसीबो जे एई फॉर्मुला में काहे पकेले जेतरा हम tan स्क्वायर x जगह एटा लिखिबा सो दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर x minus 1 dx तापरे तुम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन रे आको गोटी गोटी या करिया दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर x dx minus again 0 to pi by 4 1 dx एटा इंटीग्रेशन करिया किछ असुविधा नै बट 80 sec स्क्वायर x पुणी मने पका डेरिवेटिव फार्मूला मने पका d by dx of tan x होची sec स्क्वायर x जल्दी एटा जानि जो इंटीग्रेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव तो एटु तुम फार्मूला कोन मन पकेबो ना इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx होची tan x तेनु करी हम ए फॉर्मूला अप्लाई करी तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x केते होबो ना tan x लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू पाई बाय 4 माइनस 81 1 इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू पाई बाय 4 बस इंटीग्रेशन सही होगा बर्तमान के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस tan 0 ये गोटे माइनस सेकंड पार्ट पाई बाय 4 माइनस 0 ठीक है तापर द लास्ट पार्ट खाली हमें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल लो वैल्यू tan पाई बाय 4 केते tan 45 पाई बाय 4 45 tan 45 रे वैल्यू होला 1 tan 0 रे वैल्यू होला 0 ये गोटे पार्ट आ गोटे पार्ट ला पाई बाय 4 आटा 0 सब सिंपलीफाई कर देलो 1 माइनस पाई बाय दिस इज द आंसर right